the requirement of our syllabus. So what we saw here, we said this is the liner. And we have the piston here in between. Then we have the so-called connecting rod. And then this is symbolic, just expressing with straight lines. So actual one may be slightly different, but it represents what we are trying to discuss. Now, this is one unit. This is the crankshaft, and this crankshaft will turn in head or external direction, clockwise or anti-clockwise, as the case may be. Now, this is the liner, and as we seen, this is the cylinder cover, and we have the fuel injector here, which sprays fuel inside. This is the piston. So the power which is developed here inside the unit, we are calling it as IHP. The full form is indicated horsepower. In short, IHP. So in future we will only use a short form IHP. So this is the energy which we are getting from combustion of fuel, but everything what we get is not converted into work done. Some of it is going, some energy is going waste in cooling water. I'm sure you know we have the jacket water system where some heat energy is going. Some energy is being going waste as a heat through because of the friction between various components, piston, friction between piston and liner, friction between all the bearings. Now this is actually a bearing here, bottom end bearing, which for simplicity I have not shown, but we know the losses, frictional losses. So accounting, and some of course eventually some energy is going waste into the exhaust gases. Of course we recover some of it through turbocharger and exhaust gas economize the system, but still. So all those losses, if I account for, then whatever power I get at the shaft, we are calling it shaft power. In short, we will call it SP or BHP, same thing. SP and BHP, same thing. Brake horsepower is same as shaft power. The reason why we use BHP many times, even in cars and trucks and motorbike, we used the term BHP. It is same as shaft power. Only difference is why we call it BHP is because we calculate it by applying a brake here and then calculating what is the torque at a certain RPM. This IHP, we already now know the formula, correct? Excuse me. So we know the formula of IHP is plan, for easy remembering, PM, L, A, N, plan into 100 kilowatt. Now, since we apply brake here to calculate what is the power here, we call it brake horsepower or simply shaft power because it is available at the shaft. So shaft power is given by 2 pi NT. In this relationship, pi is pi 22 by 7. N is
the RPS, revolutions per second. Here, since we are measuring the power at the shaft, there is no question of 2-stroke or 4-stroke, because as far as shaft is concerned, how the power is coming is none of its concern. Only if you are measuring, this gives me the shaft power, and this purely depends upon what is the revolutions. But here we will use revolutions per second. T is the torque. Torque will be in kilonewton meter, force into distance. So kilonewton meter will be the torque, unit of torque. N is revolutions per second, and that is how we calculate. This will be in kilowatt again. This is kilowatt, this is also kilowatt. So what is the difference between the two, shaft power and IHP? Is the losses. Sir, can you repeat what is M in 2 pi mt? It is not M, N. N, okay. So now this is the output from the engine, correct? So we can say output is equal to input minus losses, correct? So what input was IHP and losses, I will call it mechanical losses, MEC, short form for mechanical losses. That is output, or I can say it shaft power. So shaft power is nothing but power what we get here minus the losses. And we have a term to indicate efficiency, any efficiency, eta, using the term eta, and writing a suffix here mechanical, mech. So efficiency is output over input into 100. So we say efficiency is 80%, 50%. Like marine diesel engines, we have efficiency, they're giving us slightly more than 50% now, the modern ones, whereas turbines used to give us 29-30% efficiency. Anyway, so output over input into 100 is the efficiency. What is output here? Output is the shaft power or BHP, whatever I use. Let us say BHP. What is input? IHP into 100. So this is equation number 1, and we call it mechanical efficiency. Greek letter eta. Mechanical efficiency is this. Now let us say, just to be very clear about this term, because in numericals, which we will do subsequently, the data will be in different forms, and that is why I would like to make it clear so that you don't have to break your head what does it mean, and then you can straight away know about efficiency. Let us say the IHP or the power developed here inside was IHP, 100 kilowatt power was developed. All right. Out of this, 10 kilowatt went waste through the heat transferred through the exhaust gases, etc., plus friction losses. So losses are how much? 10 किलोवाट इसमें से चली गई, तो बची क्या मेरे पास? So output will be 100 minus 10. So output is 100 minus 10 is equal to 90 kilowatt. Correct? This is as per the available data. This is just an example. So let us try to understand it. I can also say
instead of giving all that details, losses are 10 kilowatt out of 100 kilowatt, output becomes 9. I can simply say mechanical efficiency is 90%. What is BHP? Brake horsepower. Just now we said ना shaft power और brake horsepower is same. यहाँ पे जो power मिल रही है shaft पे, that is brake horsepower. और सर BHP BHP only I am saying. What is your question, please? So what is BHP? BHP is what is the power here minus losses is BHP. So that is what I am explaining you. If my power developed here is 100 kilowatt, out of the 10 kilowatt are my losses by way of heat energy going to exhaust, friction losses. What I am getting out of this is only 90 at the shaft. This 90 is BHP. Is it clear or not clear? Yes, sir. Okay. So instead of writing IHP 100, losses 10, output or BHP is 90 kilowatt, I can, if I say mechanical efficiency of the engine is 90%. Suppose I say mechanical efficiency is equal to 90%. It means 10% are losses, correct? Also, I can say if I use this equation, output will be efficiency into input. So output is equal to input into efficiency, which is 90%. So 90 by 100 from there, from this equation. Now in numerical, let me just draw a line here so that I can. This is what we are discussing. So whether in the numerical they say losses are 10%, I can simply say efficiency is 90%. If losses are 3%, what? Just consider the same example. Okay, just consider this example and answer my question, just to make it absolutely clear. If my losses are 10%, my BHP is equal to 90 kilowatt or not? Do you agree or you don't agree? Sir, can you please repeat the question? My question is, if my IHP is 100 kilowatt and I say the losses are 10 kilowatt, can I say the BHP is 90 kilowatt? Yes, sir. If I say my losses are 3 kilowatt, can I say my output is 97 kilowatt? Yes, sir. Okay, now we rephrase it. If I say my efficiency, mechanical efficiency is 10% and IHP is 100 kilowatt, can I say that the BHP is 90 kilowatt? Yes. No, sir. If efficiency is 10, then 10 हो जाएगा ना, sir? Efficiency is 10% and IHP is 100 kilowatt. What will be BHP? 10 नहीं होगा, sir. 10 kilowatt. 10 kilowatt. How? Now this efficiency is output over input, BHP over IHP, correct? So I can say BHP is equal to efficiency is in okay, let me just exactly write what I have written on top. Efficiency is 90%, so I can write in place of efficiency 90 will be equal to BHP. Sir, आपने बोला efficiency 10%, इसलिए 10 बोला, sir. No. Efficiency is 90%. तो 90 होएगा, sir. So IHP into 100 ऐसा है ना? तो अगर 90% तभी यहाँ 90 लिखा
So I can safely say BHP is 90 into IHP over 100 और 0.9, तो हमें ये 100 को की जरूरत ही नहीं है, 0.9 into IHP सीधा ही कर सकते हैं ना, हमें अगर दिया हो 90% अगर है तो BHP निकालने के लिए 0.9 से IHP को मल्टीप्लाई करें तो BHP आ जाएगा, करेक्ट? दैट इज वन वे ऑफ गिविंग द डेटा इन द न्यूमेरिकल. ये यहाँ तक तो देयर इज नो डिस्प्यूट, नो मिसअंडरस्टैंडिंग, करेक्ट? Now let us say if they say that losses are 10%. If they say mechanical losses are 10%, what does it mean? It means 90. Mechanical efficiency is 90%, correct? Yes or no? अब 10 तो मैंने एग्जांपल दिया था, हो सकता है अभी दूसरे टाइप के लॉसेस भी आएंगे. लेट अस से they say transmission losses, for example, transmission losses, we have not of course discussed what will happen after that, but let us say if the losses are 3%, then what will be the mechanical losses are 3%, what will be the VHP? 97. 0.97 of IHP, correct? Yes, sir. So whether it is given 90% efficiency or 10% losses, meaning is same. Whether it is given 3% losses or 97% efficiency, meaning is same. All right? Do you agree or no? 10% Yes, sir. Yes, loss, sir. 10% losses or 90% efficiency is same. 3% losses or 97% efficiency is same, and therefore output, whatever is the output, whether it is BHP or anything else, will be, we can write 0.9 of the input or 0.97 of the input as the case may be, depending on what is given in the as the losses or percentage. So that is what just I wanted to convey to you. Just remember, because in numerical sometimes they write efficiency is so much, 90%, sometimes they will say losses are 10%. So you should not get confused. It is same thing. It is, the meaning is same. When they say 10% loss, you must understand efficiency is 90%. If they say losses are 7%, efficiency is 93%. Like that. Okay. All right. So now we move forward. So all this will be used in numerical, so it is better to understand, no need to mug up. So first thing we are saying, first one we are saying BHP over, okay, let me write in terms of efficiency only so that there is no confusion. So I am writing eta and I am writing here mechanical efficiency, MEC, short form is MEC, is equal to BHP over IHP into 100. This is equation number 1. This is the formula so far we have discussed, mechanical efficiency. The power which I am getting here at this point is shaft power, correct? Which can be independently calculated using the formula 2 pi nt. And how it is done? If this is a shaft, एंड व्यू से ले हम, और यहाँ पे मैंने इसको एक बेल्ट लगा दी और दूसरे एंड पे मैंने डायनोमीटर लगा दिया, which gives me the torque, और मैं इसको टाइट करता जा रहा हूँ, and this shaft is rotating at n is the RPS, so many revolutions per second. So force into distance, that is the torque, and that gives me the power here. This is how the BHP of the main engine or generator or any other, even cars and trucks, जिसकी भी ऐसे निकालते हैं 2 pi nt. तो ये शाफ्ट पावर का फार्मूला हो गया. तो अगर मुझे शाफ्ट पावर तो यहाँ से निकाल ली, इंडिकेटर कॉर्ड से मैंने को IHP निकाल ली, तो BHP और IHP मेरे को दोनों पता है, तो मैं मैकेनिकल एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ, करेक्ट? सो दैट इज shaft power or BHP. Now
On ship you will find after this main engine you have a coupling here or flywheel of course, and then you have what is called as intermediate shaft. This shaft is going from here supported on bearings, as you can see here. This is called intermediate shaft. ये पूरी shaft यहाँ से support, ये flange है, coupling है, और ये पूरी यहाँ पे फिर aft में coupling और आ जाती है. इसके बाद जो आती है, मैं सिंगल लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद ये शिप साइड आ गई और यहाँ पे क्या है हमारे पास टेल शाफ्ट, करेक्ट. सो एक्चुअली ये जो कपलिंग है दिस इज ऑलमोस्ट हियर, सॉरी, so let me draw it here, and so this is intermediate shaft from here to here, and then you have the tail shaft. Tail shaft यहाँ पे आपकी सील आ गई, सिंप्लेक्स सील, और इसके एंड में जो है आपके प्रोपेलर आ गया. दिस इज अरेंजमेंट. दिस इज द शिप साइड, इट इज कमिंग आउट हियर, एंड दिस इज द सील एंड दिस इज द प्रोपेलर. अब जो पावर हमें यहाँ मिली, ये पावर इसके बाद यहाँ से हमने वी हैव ये हाउ लॉन्ग विल बी द इंटरमीडिएट शाफ्ट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द वेसल, क्योंकि जहाँ मेन इंजन है वहाँ से शिप साइड तक ये इंटरमीडिएट शाफ्ट आएगी, फिर टेल शाफ्ट आएगी. सो देयर आर लॉसेस हियर. The power transmitted from here to here, there is some losses, maybe 1% or 1.5%, but however small, they are there. They are called transmission losses. तो अगर शाफ्ट पावर में से मैं ट्रांसमिशन लॉसेस निकाल दूं तो व्हाट आई विल गेट इज द पावर एट दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट. तो इस पावर को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट डिलीवर्ड पावर. डिलीवर्ड पावर. अब मान लो मैं कहता हूं कि 1% लॉसेज हैं. हम वही एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि 100 किलोवाट यहाँ हुआ, 10% लॉसेज थे, 10 किलोवाट मेरा लॉस हो गया, 90 किलोवाट मुझे यहाँ मिली. अब मैं कह रहा हूँ कि 1% उसी ओरिजिनल IHP का 1% लॉस और है. ट्रांसमिशन में तो 1 किलोवाट और गया ना मेरा, तो 90 से 89 मिलेगी यहाँ. दैट पावर इज डिलीवर्ड पावर. सो we use a term which is efficiency, again is transmission efficiency. So transmission, पहले वाले में था मैकेनिकल. दिस इज इक्वल टू डिलीवर्ड पावर को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख रहा हूं मैं? DP, डिलीवर्ड पावर ओवर शाफ्ट पावर. अच्छा, ये इसको भी BHP की को भी शॉर्ट पावर ही लिखते हैं सब में, ताकि आसानी रहे, वरना कंफ्यूजन रहेगा. सो दिस इज ऑल्सो शाफ्ट पावर. And as I said, both are same. BHP shaft power is same. So shaft power. So delivered power or shaft power into 100 is equation number 2. This transmission losses के बाद जो power मिली, we will call it delivered power. और जितनी भी मिली, या तो अगर मुझे पता है लॉसेस कितने हैं 1% या एफिशिएंसी अगर 1% है, तो जो इसकी मिली उसमें मैं फार्मूला लगा के आई कैन कैलकुलेट दिस, नो प्रॉब्लम. और लॉसेस अगर वो बोलें 1% लॉसेस हैं, तो जो यहाँ मिली शाफ्ट पावर 1% और घटा दूंगा और जो यहाँ की कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं. लेकिन ये जो पावर मुझे मिल रही है यहाँ डिलीवर्ड पावर, दिस पावर इज गिवन टू द प्रोपेलर. अब प्रोपेलर जो है ये सारी पावर कन्वर्ट नहीं कर पाता थ्रस्ट में. इवेंचुअली इसने करना क्या? थ्रस्ट क्रिएट करना है. थ्रस्ट इज फोर्स. उस फोर्स से हमारा शिप फॉरवर्ड मूव करता है. थ्रस्ट की यूनिट क्या होती है? फोर्स है तो वी विल नॉर्मली न्यूटन, लेकिन क्योंकि ज़्यादा फोर्स होती है हम वी यूज ए बिगर यूनिट, किलो न्यूटन. सो इन ऑन शिप वी आर यूजिंग द यूनिट एज किलो न्यूटन. 1000 न्यूटन इज 1 किलो न्यूटन. सो दिस प्रोपेलर हैज़ गॉट ए सर्टेन एफिशिएंसी. अगर मान लो 100 किलोवाट और उसमें से इसकी 70% एफिशिएंसी है, तो ये 100 में से 70 किलोवाट ही देगा थ्रस्ट पावर. सो द पावर ऑब्टेन्ड हियर वी कॉल इट एज थ्रस्ट पावर और TP, इन शॉर्ट TP.
शॉर्ट हम इसलिए साथ साथ करते जा रहे हैं, न्यूमेरिकल में फिर हम पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, डीपी एसपी टीपी ऐसे लिखेंगे ताकि हमें जल्दी से टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए। टीपी स्टैंड फॉर थ्रस्ट पावर। तो अब आ जाती है प्रोपेलर एफिशिएंसी। थर्ड वन इज प्रोपेलर एफिशिएंसी, ईटा प्रोपेलर, शॉर्ट में ऐसा। सो थ्रस्ट पावर divided by delivered power dp into 100, we can say it is propeller efficiency. अब जो ये प्रोपेलर है ये हमें जो थ्रस्ट देता है, the entire thing is not converted into actual power which is used to move the vessel, and that power is called actually EP or effective power. Effective. And there is some losses which we call as hull losses. तो वो हल लॉसेस तो प्रोफाइल पे हैं, है ना। नेवल आर्क जैसे हल प्रोफाइल करता है तो पूरी की पूरी थ्रस्ट पावर को इफेक्टिव पावर में थोड़ा लॉसेस हैं हल। सो बेटर हल डिजाइन, बेटर एफिशिएंसी। सो लास्ट वाला आता है फोर्थ इज हल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी हल, दैट इज ईपी ओवर टीपी इनटू 100। तो ये हमारे चार एफिशिएंसीज हमने देख ली। और पावर्स आई आईएचपी, उसके एक सीक्वेंस में हमेशा याद रखना है इसको, इसलिए एक स्ट्रेट लाइन में हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पे डॉट लगा लेते हैं, फर्स्ट इज आईएचपी, फिर हम यहाँ डॉट लगा लेते हैं शाफ्ट पावर, फिर एक डॉट लगा लेते हैं डीपी, फिर एक डॉट लगा लेते हैं टीपी, और फिर एक डॉट लगा लेते हैं ईपी। अब हमें ये इससे सीक्वेंस में इजी क्या होता है कि कोई भी एफिशिएंसी ले लो, अगर मैकेनिकल एफिशिएंसी लूंगा तो बाद वाली पावर शाफ्ट पावर ओवर आईएचपी इंटू 100 इज द मैकेनिकल एफिशिएंसी। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी बाद वाली डिलीवर्ड पावर ओवर शाफ्ट पावर इंटू 100 इज द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। प्रोपेलर एफिशिएंसी थ्रस्ट पावर ओवर डिलीवर्ड पावर इंटू 100 इज द प्रोपेलर एफिशिएंसी। फिर हल एफिशिएंसी इफेक्टिव पावर ओवर थ्रस्ट पावर इंटू 100 इज द एफिशिएंसी। तो इसका ये तो मेथड है याद रखने का कि कौन सी सीक्वेंस हमें पता है। तो न्यूमेरिकल में सडनली ही विल से थ्रस्ट पावर इज सो मच, कैलकुलेट दिस। तो ये है कहाँ पे है ये, तो बाकी एफिशिएंसी दी हुई हैं। तो अगर मुझे पहली वाली निकालनी है तो आई हैव टू डिवाइड बाय द एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल अगर शाफ्ट पावर दिया है और आईएचपी निकालनी है और एफिशिएंसी मैकेनिकल एफिशिएंसी 90% दिया है, तो शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाय 0.9 विल बी आईएचपी। जो भी शाफ्ट पावर है उसको 0.9 से डिवाइड करूंगा तो आईएचपी आ जाएगा। अगर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इज 97% और डिलीवर्ड पावर मुझे पता हो तो डिलीवर्ड पावर डिवाइडेड बाय 0.97 विल गिव मी शाफ्ट पावर। वाइस वर्सा, अगर शाफ्ट पावर पता है तो शाफ्ट पावर इनटू 0.97 विल गिव मी डिलीवर्ड पावर। सिमिलरली अगर आईएचपी पता है और मैकेनिकल एफिशिएंसी 90% है तो आईएचपी इनटू 0.9 विल गिव मी शाफ्ट पावर। So as I am moving this side, power reduces, so I must multiply by the efficiency to get the next, and so on. When I have to get a power on left hand side, I am moving from, if I know with this power and I want to calculate this one, I must divide by the efficiency. Just a thumb rule, so that will help us in while we are calculating. Okay, so is it clear everybody? और एनीबडी हैज एनी डाउट? ये हमें याद रखना है, कहीं नोटबुक पे भी आप इसी सीक्वेंस में लिख के रखेंगे तो अच्छा होगा, बाकी तो आपकी मर्जी है। इज इट ओके? नाउ वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स। Okay, sir. ऑल राइट, सो आई विल क्विट दिस
So we did this one numerical yesterday. Now let us do this simple one and then we'll go further. The torque on the engine shaft is found to be 320 kilonewton meter when rotating at 100 rpm. Calculate the shaft power of the engine. So 221056. सही नहीं है भाई, जरा चेक करो. रात से कुछ खाया भी नहीं हो तो ये भी दिमागी कारण है भाई. Come again? इलाज करते हैं अपने आप में लगी होगी लगा के नहा लेते हैं फिर पूछती हूँ प्रॉम्प्ट इसने का बना के रख दो. कोई लंच की बात हो रही है बैकग्राउंड. Sir, 3680.9. ऐसे ड्रॉप होंगे Sir, 3680.9. तो इधर ठीक है रात को 3687 ठीक है. I think you use वो सर आपने 110/60 कर दिया, हमने उसकी वैल्यू ले ली, इसलिए मैं भी चेंज आ रहा सर. हाँ चला I ठीक है. You have to use the value of n as RPS ना. बहुत देर से हाँ आरपीएस लिया है सर, 110/60 किया तो उसकी वजह से मतलब आपने सीधा उसमें इक्वेशन में लगा दिया है. हाँ. मैंने उसको सॉल्व करके डाला तो 3680.9 आ रहा है, क्योंकि उसमें 1.8333 करके आ रहा है. अच्छा, just there is some background noise. Somebody is इधर खाना भी पार्ट किया ना एक मिनट तो सारे भेज दिया बच्चे खाए थे छोले खाए somebody's mic is on. Repeat करेंगे sir answer. Whose mic is on? Sir, 3684.2, right? गला मम्मी का खराब मेरा खराब तेरी खराब मम्मी कह रही I can't hear because there is some background noise. Somebody's family is discussing something. Please switch off your mic. सर आप म्यूट ऑल कर दो सर. मैं करना नहीं चाहता, but anyway I am doing. Because you have to 3687.6. regulate yourself, because when you want to speak, you are free to speak, but make sure others are not disturbed. All right. So let us come back to the PPT again. I just actually. So how much you got? 3687.6 is the answer. 84. सर इसमें हम लोग अगर 110/60 को सॉल्व करके डालेंगे तो आंसर अलग आता है सर. मतलब कितना? 80 से 87 तक आंसर आएगा सर, फिर अलग अलग आता है. वो डिपेंड करता है पाई आपने क्या लिया है, whether you are taking 22/7 or 3.14. That is where the difference comes, not because of this. नहीं पाई तो 22/7 ही लिया है सर. अभी वो 1.8333 आ रहा है, तो उसको 1.83 लेंगे तो 3680.9 आ रहा है. 1.84 लेंगे तो अलग आंसर आएगा, और आप सीधा ये 110/60 करेंगे तो इतना आंसर आ रहा है सर. बस ठीक है. It's okay. Whichever way you do, it should be nearly same. 8-7 तो आना ही चाहिए ना. बाकी ये decimal में maybe small difference here and there. So, all right. So now let us see this one. A single cylinder two-stroke engine has a cylinder diameter of 200 mm and a stroke length of 270 mm. If the mean effective pressure is 5 bar when running at 360 rpm, calculate the indicated power developed.
25.45 kilowatt. Indicated power, how much you got? 25.45. 25.45. Yeah. ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, एब्सोल्युटली करेक्ट. So 25.11. ठीक है, it's okay. I will not go into details how you got that decimal places because that you have to see yourself. It should be around that much only, I can say. And the procedure. Yeah, as long as your procedure is correct, even if your answer is exactly not matching, don't think that you will lose all the marks. Maybe 1 mark or 2 marks will be deducted. If it is too different, correct? Suppose your answer is coming 25.12 is okay, but suppose it is coming 10, but all procedure is correct. Still you will get marks, but you will lose some marks for the answer, but not on decimal. So that's why I am more worried about the correct procedure being followed, correct formula being used, because answers will be different. Even the data you will find from one paper to another paper in MMD keeps changing slightly here and there. Same question but with different data. You will think, okay, this question answer was so much, 15.2 knots I should have got. With different data it will be changed. So you will probably will make a mistake if you are only making up the answer. All right. सर इसका पीएम का एक बार थोड़ा सा बताएंगे, पीएम का कंफ्यूजन हो रहा है. हाँ. इसमें ऐसा है कि सिंगल सिलेंडर 2 स्ट्रोक. पहली बात तो 2 स्ट्रोक इसका मतलब है हम n समझ गए कि n इज इक्वल टू 360/60 RPS है, RPS by 2 नहीं है. 2 स्ट्रोक में n इज RPS, 4 स्ट्रोक में n इज RPS by 2. तो हमारे वाले क्वेश्चन में कहाँ गया, 360 है RPM by 60, तो 6 हो जाएगा, माना ना. 6 इज माई n. ये हमें इसमें नहीं गलती करनी कभी भी, क्योंकि इसमें थोड़ा कई बार हो जाता है कंफ्यूजन. अब हमारे पास वो कह रहा है कि सिलेंडर डायमीटर, सो हम d इज इक्वल टू 0.2 मीटर. इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है. कैपिटल L हमें पता है 270 mm है, तो 0.27 मीटर L हो गया स्ट्रोक. मीन इफेक्टिव प्रेशर PM इज गिवन, PM इज इक्वल टू 5 बार. हमें निकालने की जरूरत नहीं है, दे रखा है पहले ही. दिस इज 5 बार. व्हेन रनिंग एट 360 RPM कैलकुलेट. बस कुछ नहीं निकालना. IHP इज इक्वल टू PM उसने पहले ही दे दिया, सो 5 इंटू L, प्लान है ना, प्लान, तो L हो गया 0.27 इंटू A हमें अलग से रफ में निकाल लेंगे ना. A इज इक्वल टू 5d²/4. D हमें पता है, तो इसका स्क्वायर करके जो भी एरिया मीटर स्क्वायर में आया वो यहाँ डाल देंगे. N हमने निकाल ही रखा है 6 इंटू 6. बस इतना ही करना है, ठीक है ना. यस सर, हो गया. हाँ, उतना ही. 25 पॉइंट जो है आपका, ये 25.4. 25.456 इज द करेक्ट आंसर. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे की चिंता मत करो आप. मेथड सही होना चाहिए और वो सब सही होने चाहिए जो आप यूज कर रहे हो.
यूनिट्स का ध्यान रखना। अब हम आ जाते हैं सर आंसर कितने डेसिमल्स तक लें सर? 2 डेसिमल बस स्टैंडर्ड है यार, 2 से ज्यादा की जरूरत नहीं होती है। ओके सर। ऐसे तो 5-6 आ जाएंगे। अब कंप्यूटर पे करते हो, वो कंप्यूटर कह रहा हूँ कैलकुलेटर से करोगे तो साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो उसमें 8 डिजिट हैं, तो वो सब थोड़ा लेना है। हमें 2 डिजिट तक राउंड ऑफ ले लो, इज इनफ। सो ऑल राइट, नाउ अब इसमें ये वाला क्वेश्चन में एफिशिएंसीज वगैरह सब दे रहे जो हमने अभी सुबह मतलब जब शुरू किया था लेसन, वो सब आ गई थी, तो उसको सब आपने देखना है। अब हमें अप्लाई करनी है ये एफिशिएंसीज। ये ऊपर तो वही दे रखा है जैसा पहले हमने किया न्यूमेरिकल ऐसा। तो पार्ट 1 इज सेम है ना, इंडिकेट कैलकुलेट द इंडिकेटेड पावर ऑफ द इंजन एज्यूमिंग ऑल सिलेंडर्स डेवलप्ड इक्वल पावर। ध्यान रखना है, एक की निकाल के नहीं बैठ जाना है, ये हमेशा देखेंगे कितने यूनिट्स हैं। तो इसने दे रखा है एरिया ऑफ इंडिकेटर टेकन ऑफ 1 सिलेंडर ऑफ ए 6 सिलेंडर, 1 यूनिट का दे रखा है डिटेल, 6 उसके अंदर है, तो 1 का निकाल के 6 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है, आंसर एकदम ही गलत हो जाएगा। तो पहले तो पावर निकाल लेंगे, 1 की मल्टीप्लाई बाई 6, टोटल पावर आ गई, आईएचपी आ जाएगी। उसके बाद दी थ्रस्ट पावर निकालनी है, उसने हमें निकालनी है, मतलब इफ मैकेनिकल एफिशिएंसी दे रखी है, ट्रांसमिशन मैकेनिकल एफिशिएंसी 97 है, ट्रांसमिशन लॉसेस 3% है, अभी आपको खुद देखना है इसका क्या मतलब है, एंड प्रोपेलर एफिशिएंसी 95%। ये सब एफिशिएंसीज लगा के और लॉसेस लगा के आपको निकालना क्या है, थ्रस्ट पावर। ठीक है, ऑल राइट, लेट अस डू इट। सर करना होता नहीं ना, हेलो सर। वाटर नहीं डाले फिर भी सही बन गया। फ्राई करके फिर तरी उबाल के। Somebody has kept the mic open, please mute yourself. हाँ कच्चा ही फ्राई करते हैं पहले सरसों तेल में। हाँ थोड़ा सर स्लाइड दिखा दो सर, वो न्यूमेरिकल वाला। Yeah, I'm coming back because I had to mute. Who's, I think Roshan's mic was on. All right, this is a slide. सर हेलो। सर एक क्वेश्चन था सर, एक डाउट था सर। हाँ पूछिए। सर ये लास्ट क्वेश्चन में भी सर एक सिलेंडर का ही डायमेंशन दिया था, तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इट वाज 2 स्ट्रोक इंजन।
टू स्ट्रोक है, एक यूनिट तो एक ही है ना। अभी 4 स्ट्रोक होगा तो 4 से थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, कितनी यूनिट हैं। सिंगल सिलेंडर, इसका मतलब एक ही सिलेंडर, एक ही यूनिट है उस इंजन में। ये जो आपके स्क्रीन पे भी लास्ट क्वेश्चन है, एक ही सिलेंडर है, एक ही यूनिट है, तो एक ही का निकाला हमने। Yes, sir. Yes, sir. It was single cylinder. Okay. ठीक है ना। अगर ये 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक तो उसके प्रोसेस के ऊपर है, या नंबर ऑफ यूनिट तो अलग ही बात है ना, कितने हैं यूनिट। अभी इस वाले क्वेश्चन में 2 स्ट्रोक, इसमें भी 2 स्ट्रोक इंजन है लेकिन 6 सिलेंडर हैं उसमें, ये फर्क है। वो उसमें एक ही सिलेंडर था। So indicated power 11266.5. 11276.6 या 5, ठीक है। Yes. The thrust power 10070.6. थ्रस्ट पावर 10079। 70.6. ओके, ठीक है, मोरलेस करेक्ट है, क्योंकि आपने इसका मतलब है ठीक लगाई हैं सब एफिशिएंसी, वरना तो ज़्यादा फर्क हो जाता। ठीक है। सो थ्रस्ट हमें आईएचपी निकली, आईएचपी से मैकेनिकल एफिशिएंसी तो जो आया उसको 0.97 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो फाइनल आया वो तो हो गया शाफ्ट पावर, फिर 0.97 से फिर मल्टीप्लाई करा तो Delivered power आ गई. 3% लॉस है तो 97% एफिशिएंसी हो गई, तो हमारी डिलीवर्ड पावर आ गई। फिर उसमें 95% प्रोपेलर की एफिशिएंसी है तो उसको फिर मल्टीप्लाई किया 0.95 से, तो हमारी थ्रस्ट पावर आ गई। बस इतना ही निकालना था इसमें। सर फर्स्ट पार्ट पावर कितना है? 1878 राइट? 11,276, 187, ये तो एक की आई। 1879 इज ऑफ 1 सिलेंडर, 6 सिलेंडर हैं, ये मत बोलो आप। ठीक है ना, 6 सिलेंडर का हमेशा निकालोगे ना आप, इसीलिए बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूँ।
नंबर ऑफ यूनिट्स का ध्यान रखिए न्यूमेरिकल में कितनी है उस इंजन में। अब शिप पे भी आप देखते हो ना, अब तो 14 यूनिट के आ रहे हैं, तो एक का हम शिप पे जब निकाल रहे होते हैं सबका निकालते हैं ना 14 के 14 यूनिट का, फिर ऐड करते हैं। यहाँ पे उसने कहा कि सब यूनिट्स लिखा है assuming all cylinders develop equal power, so that is how we are just multiplying, calculating for one and multiplying. All right, so we have already reached the lunch time. If there is still any doubt, we'll discuss in the next class, and so we will call it a day today, and bye from my side. Nice appetite, and see you again.